Hello everyone and welcome back to this time रैबिट डिफेंस। चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया थोड़ा सा क्योंकि इसमें मैं फ्यूचर में और भी चेंज करूँगा बट फ़िलहाल के लिए यही रहेगा। एंड वन मोर थिंग इज़ thank you everyone for like all the love and support in my first ever video, and also for all the lovely comments. मैंने वो वीडियो बस बनाई थी just for the sake of making the video. I did not expect anyone to like really like it, or like I did not expect to get that many views in my first ever video, and also when the video was like 20 minutes long. So I mean, thank you everyone and everything. And now टॉपिक पे वापस आते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कि पेपर रेंजेस जो होती है ना मिसाइल्स की, हमें उन पे ट्रस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। यानी कि आई वाज लाइक बैक ऑन ट्विटर और एक्स, काफ़ी सारे लोगों को मैं देख रहा था। दे वर आर्ग्यूइंग विद ईच अदर एंड आर्ग्यूइंग विद मी दैट कि एक मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर्स है, लाइक जैसे PL-15E की रेंज। सो 145 किलोमीटर्स के बाद वो मिसाइल जैसे मैजिकली आसमान से गिर जाएगी। ऐसा नहीं होता। एंड डोंट वरी, मैंने एक वेबसाइट फाइंड किया। इट इज़ एन ओपन सोर्स वेबसाइट, इट इज़ नॉट अ सिमुलेटर बट इट इज़ एक्सट्रीमली गुड। इट like calculates drag, altitude, all those things, trajectory optimizations, trajectories and everything. So I mean it's a good website. आगे जाके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं दूंगा। सो फर्स्ट बिफोर ऑल दैट, बस मैंने ये क्या स्टार्ट ऐसे करना है कि अगर आप एक पेपर पे किसी मिसाइल की रेंज आप देख रहे हो 200 किलोमीटर्स है, एंड दूसरी मिसाइल की रेंज 145 किलोमीटर्स है, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो 200 किलोमीटर्स वाली ऑटोमेटिकली इज़ अ बेटर मिसाइल इवन इफ इट्स लेट्स से यूजिंग सेम सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट। और ऐसा भी नहीं है कि एक आइडिया लेने के लिए वो रेंजेस अच्छी हैं। ये भी एक बहुत ही लॉन्ग टर्म बात, मतलब लॉन्ग स्ट्रेच्ड बात हो जाएगी। ऐसा भी नहीं होता क्योंकि ये कोई गाड़ी तो है नहीं, ना ही कोई बाइक है जहाँ पे टेस्टिंग के कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं। यानी कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि यस ए मतलब एक कंपनी है जिसने मिसाइल ए बनाई है एंड सेकंड कंपनी है जिसने मिसाइल बी। लेट्स यूज़ द नेम लाइक एक कंपनी है जिसने PL-15 बनाई है, एक कंपनी है जिसने मीटियोर बनाई है। तो वो ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि दोनों जाके एक टेबल पे बैठे हैं, हाँ जी आज हम दोनों ने अपने अपने मिसाइल टेस्ट करनी है तो ये एक स्टैंडर्ड रखेंगे, हम लोग सेम एल्टीट्यूड पे फ्लाई करेंगे, टारगेट भी सेम स्पीड पे आएगा। सो दोनों मिसाइल को सेम जगह पे टेस्ट करेंगे और उनको पब्लिक किसी मैगज़ीन में या फिर टेक्निकल किसी जगह पे भी हम उसको लिस्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होता। एंड कंपनीज ऐसा भी करती है। जो आप और मेरे जैसे नॉर्मल पीपल बंदों के लिए रेंजेस होती हैं वो रियल रेंजेस नहीं होती। इन कंपैरिजन अगर एक एक्सपोर्ट कस्टमर है, लेट्स से कि आप में से कोई जा रहा है एक मिसाइल को परचेज करने के लिए, एंड इफ़ दे ट्रस्ट यू, ऑफ कोर्स दे ट्रस्ट यू, दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग इट। अगर वो आपको पे ट्रस्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स वो आपको मिसाइल को फायर करके दिखाएंगे, उसकी मैक्सिमम मिनिमम रेंजेस एंड ऑल दैट। एंड आप उस मिसाइल की वैल्यूएशन करोगे एंड उसके बाद आप परचेज करोगे। सो अगर पेपर पे कोई अपनी मिसाइल की रेंज कम करके लिख कम दे रहा है ऑस्पेक्स के लिए एंड फॉर एनी अदर रीज़न, इससे उसकी सेल्स हर्ट नहीं होती क्योंकि वो जनरल पब्लिक को तो नहीं सेल कर रहे ना। वो कंट्रीज़ के दरमियान में डील्स होती हैं, ना कि एक दो बंदों के दरमियान में। एंड एज ए जैसे मैंने पहले बोला है कि कोई भी स्टैंडर्ड्स नहीं होते। हो सकता है कि एक कंपनी ने अपनी मिसाइल को लेट्स से 10,000 फीट, सॉरी 10,000 मीटर्स पे टेस्ट किया हो, या इट इज़ अबाउट 32,000 फीट, यानी कि उतनी भी टेस्ट किया हो सकता है कि दूसरी मैन्युफैक्चरर ने मिसाइल मैन्युफैक्चरर ने अपनी मिसाइल को टेस्ट किया हो लेट्स से 4,000 मीटर्स एट सबसोनिक स्पीड्स। तो फर्स्ट ने 10,000 पे किया है एट Mach 2, सेकंड ने सबसोनिक में किया है and at like 4 or 5,000 meters, around 15,000 feet somewhere there. Okay, ऐसा तो नहीं होता। मतलब आप उसको रोक तो नहीं सकते ना वैसा करने से। जैसे मैंने पहले बताया इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जो पेपर्स पे रेंजेस हो सकती हैं वो कुछ भी हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के यानी कि इंटेंशनली रेंज अपनी कम बताई हो जनरल पब्लिक को, या देयर कुड बी एनी अदर थिंग।
एंड इसको आगे जाके एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैं आपको दूंगा, वेरी रियल, काइंड नॉट रियल बट रियली गुड सिमुलेटर्स से। एंड लेट्स गो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये कोई बहुत ही टेक्निकल वीडियो नहीं होगी जिसमें मैं कोई बहुत ही हाई लेवल के टेक्निकल टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करूँगा। दिस इज़ फॉर जस्ट फॉर बिल्डिंग ए फाउंडेशन बेस, ए फाउंडेशनल बेस बिल्डिंग के लिए है। यानी कि लोगों को एटलीस्ट एक्चुअल में बताने के लिए कि मिसाइल्स कैसे वर्क करती हैं, वो होता है क्या है, उसमें क्या क्या होता है। एंड कि एक रेंज कोई सर्टेन चीज़ नहीं होती। यानी कि लेट्स से कि अगर एक मिसाइल की रेंज 100, इसका ये मतलब नहीं है कि वो लाइक 90% ऑफ द टाइम और एटलीस्ट इवन 50% ऑफ द टाइम भी उस 100 किलोमीटर पे हिट करेगी। वो मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे या फिर मल्टीपल चीज़ों पे डिपेंड करता है उसकी रेंज। एंड उससे सबसे पहले मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स वगैरह को क्लियर करना चाहता हूँ। आई नो कि जहाँ जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से मोस्ट को पता होगा, बट अगर किसी को नहीं पता तो कॉर्पोरेटिव टारगेट ऐसा होता है जो कि मोस्टली स्ट्रेट फ्लाई कर रहा होता है, कोई हार्ड मैन्यूवर्स वगैरह भी नहीं करता, कोई एग्रेसिव चेंजेस भी नहीं होती एल्टीट्यूड की। ये नहीं होता कि 10,000 मीटर से उसने डायरेक्ट डाइव लगा दी 4,000 मीटर्स पे और समथिंग लाइक दैट। ना ही वो इमिडिएटली ये भी नहीं देता कि यू टर्न लेके मतलब वो पीछे की तरफ जा रहा है। ना ही कोई डिफेंसिव टैक्टिक्स होती है, नॉचिंग हो गई, डॉजिंग हो गई, नथिंग लाइक दैट। ओके, नो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स आर इंक्लूडेड इन दैट आइदर। एंड एक नॉन कोऑपरेटिव टारगेट होता है कि जो रियल लाइफ में होता है, यानी कि या फिर अगर आप इंटेंशनली भी कर रहे हैं अपनी मिसाइल को टेस्ट करने के लिए, यानी कि वो ये करेगा, वो नॉच करेगा, वो डॉज करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स अटैक करेगा मिसाइल के ऊपर, वो हार्ड मैन्यूवर्स करेगा, मिसाइल की एनर्जी को ब्लीड करेगा, या ट्रेन हगिंग। टेरेन हगिंग ये होता है कि आप ज़मीन के बहुत पास फ्लाई करते हैं, उसको टेरेन मास्किंग भी कह सकते हो, टेरेन हगिंग भी। आई मीन इट्स काइंड ऑफ अ सेम थिंग। या फिर ये हो सकता है कि वो जस्ट यू नो अपने जेट को टर्न करेगा एंड ही विल रन in the opposite direction back to his base. Range of a missile is also based on the altitude of the target and also the altitude of firing aircraft. Same for speed, or speed of the target, speed of the firing aircraft. ECM environment. I mean, if you jam a missile, it gets of course a bit, then it has to realign itself with the course again. And now, one of the most, or like the most overlooked part of a missile when we are talking about ranges is battery life. Like everyone talks about you have to fire it at higher altitudes, higher speeds, etc., etc., but no one talks about battery life in these kind of air-to-air missiles, or generally in like any kind of missile in military. The batteries that are used are called thermal batteries or molten salt batteries. They're kind of a batteries that kind of are like sleeping until you fire them. So a battery has to power radar seeker, flight computer, guidance system, actuators, servo motors in a missile body, and data link. All of these require electrical power. The molten salt batteries or the thermal batteries that are in these kind of missiles, they have like as soon as you turn them on or ignite them, their internal chemicals heat up rapidly, electrolyte melts, and the battery suddenly produces large amount of power that is needed and really needed for to power one of the most power hungry component on a missile seeker, that is its active radar homing. A radar in an active radar homing missile, that is not the case in IR, but you still have to power the electro-optical sensor or imaging infrared sensor in the IR missile too. But we are here talking about the why electrical like why battery time is important when you're talking about air-to-air missile ranges like BVR ones, is because let's say like a conservative number, let's say Mach 3, and at Mach 3 to cover a distance of 1 kilometer a missile will need 1 seconds. So let's say if a missile has a time of 80 seconds in it, the most it can do, like if it is constantly going at Mach 3, is 80 kilometers. Okay, it can't do more than that. That is kind of round about the time, battery time of PL-12 missile. So even though if a missile can kinematically go further,
But if its battery cannot last that long, it does not mean anything. As soon as battery will stop powering, the guidance will stop, electronics will stop, seeker will shut down. So it will be just like a flying stone. And now to give a practical example why paper ranges don't really matter, we are here on StatChart. ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप मिसाइल की मतलब गाइडेंस वगैरह या किनेमैटिक्स परफॉर्मेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर सिमुलेट कर सकते हैं. दिस derived from War Thunder's files. So, but I mean, I'm not saying that whatever missile I'm going to simulate here will be real to how it should perform in like reality, but it would give us a good foundation to why we should not believe paper ranges and how drastically different they can be depending on the altitude and other aspects. So first of all, let's select something like PL12, because most of the JF-17s and even J-10C can carry PL12. And first shot is at like 60 kilometers. Let's say कि ये एक JF-17 ने shot लिया है. Target was flying at 10,000 meters and it was a corporative target. I mean, it was in like helping us to shoot it down, or it was not doing any hard maneuvers, nothing. We're just coming at straight line at a constant speed of Mach 1, and we are also going to fire our missile while our jet is like at Mach 1. So if it is a JF-17, let's say it is at 6,000 meters. I mean, let's say it only had like enough time to gain 6,000 meters in altitude. Now it has to fire its missile. So let's see what happens if it does that at these altitudes. So here is the target and here is missile. So missile will loft up, then it will drop down on the target. So it took around 68 seconds for the missile to reach a target at 60 kilometers if it was fired by a JF-17 at 6,000 meters and Mach 1. So it took around 68 seconds for the missile to reach the target, and the speed is barely Mach 1.3, like barely 200 kilometers more than the target speed. So if the target had moved even a little bit, अगर इस टारगेट ने अभी थोड़ी सी भी मतलब मैन्यूवर कर लिया होता तो ये मिसाइल इसको हिट कभी भी नहीं कर पाती. नाउ लेट्स से कि सेम एवरीथिंग लाइक टारगेट्स अभी भी सेम ही अल्टीट्यूड पे है, सेम ही स्पीड पे है, सेम ही रेंज पे है. बट अगर ये सेम मिसाइल J-35 ने फायर की होती तो वो ज़्यादा एल्टीट्यूड के पे स्टेयर कर सकता है क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं होगा, वो स्टेल्थ है at these like 150 180 kilometers of ranges. 60 is just here like as a good number. In reality it will be more like 150 to 200, somewhere between that. So J-35 will not be detected at those ranges, so it can fly higher and it can fly faster. So that's it was going 2100 kilometers per hour at 12,000 meters and altitude. So here, as we all know, the missile did hit the target but barely. It took 68 seconds to reach, and the speed in the terminal dive was around Mach 1.3, which is like nothing if the target is coming at Mach 1 itself. So now let's simulate what will happen if the same missile is fired from a J-35. Here you can see, here is the target, here is the missile this time. It was fired at much higher speeds and much higher altitude, and as you can see it barely took 45 seconds instead of 60 seconds. And look at the terminal energy of this missile. It is like more than Mach 1.2 and 1.3 more than the terminal speed of the same missile if it was fired from a JF-17. And similarly, it took less time to reach the target and it reached the target faster. So that means same missile with J-35 can hit a target at a longer range than same missile fired from a JF-17. Now let's do that too. Let's do 95 kilometers over here, or 95 kilometers. Let's fire PL-12 at 95 kilometers, and
At 95 kilometers, if it was fired from a J-35, the terminal speed is still massive. It is around still Mach 2.5 at 95 kilometers. It barely reached. It was about to run out of battery. 4 seconds were left, but it did reach the target. Now let's do same thing with JF-17. So let's go like 6,000 meters in altitude and Mach 1 and same range. As you can see, everything else was same, just the platform firing it was changed, and wow, it did not even reach 40 kilometers, let alone going 95 kilometers where the missile is literally same. Only difference that occurred is the platform that is firing it, and also the altitude. At higher altitude the drag is way less compared to lower altitudes. Lower altitude there is much more air, so drag is more, and drag also increases like in square compared to velocity. So let's say if the velocity is 2 times, drag is 4 times, velocity is 3 times, drag is 9 times. So yeah, it is I guess a very good example why we should not believe ranges of missiles. As you saw, if J-35 had fired it, the same PL-12 easily, kind of easily reached 95 kilometers, but with JF-17 it was barely able to go 40 kilometers. It ran out of time, and the speed was at its terminal dive. It was starting to do its terminal dive, and speed is already barely Mach 1. I mean, it's already lower than Mach 1. So yeah, this should give you a good idea why we should not believe paper ranges. There are a lot of aspects that I can't simulate even in this software. For example, electronic warfare, it will break data links. It will force the missile to go off course. Missile will have to reacquire the target and realign itself. That will make it lose its energy. And I can do one more thing. I can do one for like lower altitudes too. So let's say like we are at really low altitudes and we are going like even 30 kilometers this time, both at Mach 1. Let's say at 1000 meters, so 1 kilometers above the ground still. Let's say if it can even go 30 kilometers. Well, yes, it did go 30 kilometers at 1000 meters altitude. It took 35 seconds and the speed is already lower than Mach 1. So you can see like in real life it will be impossible for this missile to hit something at 30 kilometers uh, like fired from at Mach 1 by JF-17. So you see the same missile which was easily retaining its speed of Mach 2.5 and hitting targets at 95 kilometers is barely hitting a target at 30 kilometers if the altitude is lower. So yeah, again, this was to prove that why we should not believe paper ranges, and this was it. And yep, that's it. Thank you for watching, and I know this video might be a bit boring, but I tried my best. I know I have said all this before, but whatever. And yeah, take care everyone, and bye bye.